अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर आहियूं प्रोग्राम क्रॉस टॉक सां गॾु। आऊं आहियां अवांजो मेज़बान जुनैद अंसारी ऐं मूंसां गॾु आहिनि जावेद लांगा। नाज़रीन, काल्ह पंजाब सूबाई असेंबली में पंजाब अंदरि 2 नवां सूबा ठाहिण लाइ क़रारदाद पेश थी, जंहिंजी सभिनी लीडिंग पार्टीज़ हिमायत कई। इहा हिकु तमामु मुंझियल क़रारदाद आहे, जंहिं नक़ाद इहो चवनि पिया त हींअर जेको ज़िक्र थिए पियो सराइकी सूबे थिए पियो, ऐं ज़ाहिरी तौरु इहो तासुर ॾिनो वियो त नवाज़ लीग पंजाब अंदरि सराइकी सेंटीमेंट जेको नेशनल सेंटीमेंट सूबो ठाहिण खां जेका इनराफ़ करे पियो, उन पंहिंजी पॉलिसी में कामयाबु वई आहे। ऐं पीपुल्स पार्टी लोकल नारो कंहिं हद ताईं उनखे हुननि डमी करे छॾियो आहे, छाकाणि त पीपुल्स पार्टी सराइकी बेल्ट ते मुश्तमिल हिकु सूबो चाहे पई। पर उनखां अॻु तव्हां यादि हूंदो परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहंदो मोहम्मद अली दुरानी साहिबु 2009 में मंज़र ते आयो ऐं उन बहावलपुर रियासत जी बहाली चाही, जंहिंखां पोइ हिकु उहा एॾो ख़ासि बहावलपुर रियासत जे हवाले सां का सियासत कान थी, पर सियासत सॼी सराइकी सूबे ते थी। उन सां गॾोगॾु ॾखिण सराइकी सूबे जी बहाली जो ज़िक्र त न कयो वियो आहे, ॾखिण पंजाब सूबो ऐं बहावलपुर रियासत जी बहाली जो ज़िक्र कयो आहे। हाणे असां पहिरियों सम्झणु चाहींदासीं पंजाब जी टोटल एराज़ी में कंट्रीब्यूशन बहावलपुर या ॾखिण पंजाब या सराइकी बेल्ट केतिरो आहे। नाज़रीन, तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त पंजाब सूबे जी मजमूई एराज़ी 2,05,345 स्क्वायर किलोमीटर आहे, ऐं जंहिं मां असां जेकॾहिं सराइकी बेल्ट खे कढूं, जेको सराइकी सेंटीमेंट आहे, जिते सराइकी ॻाल्हाईंदड़ अक्सरियत में रहनि था, त पंजाब जा ॾाखिणिया 14 ज़िला आहिनि। जिन में पंजाब जा ॾाखिणिया ज़िला मुश्तमिल आहिनि, त उन ते पंजाब जो उलहंदो ज़िलो मियांवाली ऐं बखर पिणु मुश्तमिल आहे। उहा टोटल एराज़ी बिहे थी 1,20,708 किलोमीटर, 14 ज़िलनि ते आहे। हाणे जे पाण ॻाल्हि कयूं बहावलपुर रियासत जी, जेका अॻूणी बहावलपुर रियासत जी, जेका राजनपुर, बहावलपुर ऐं रहीम यार ख़ान ज़िलनि ते ॿधल डिवीज़न आहे, मौजूदा बहावलपुर डिवीज़न, उन जी एराज़ी 45,588 किलोमीटर आहे। अहिड़ी रीति जेकॾहिं बहावलपुर खे तव्हां सराइकी बेल्ट मां कढंदव त बाक़ी सराइकी बेल्ट जी एराज़ी 75,588 किलोमीटर बचे थी। अहिड़ी रीति जेकॾहिं सराइकी बेल्ट जंहिंखे ॾखिण पंजाब चयो वञे थो ऐं बहावलपुर रियासत ॿिन्ही खे गॾाइजे त उनजी एराज़ी 1,20,708 किलोमीटर थिए थी। ऐं जेकॾहिं उनखे पंजाब जी मजमूई एराज़ी मां कढिजे, जेका मजमूई एराज़ी पंजाब जी 2,05,345 किलोमीटर आहे, त पंजाब जी बाक़ी एराज़ी वञी 84,633 किलोमीटर बचे थी। अहिड़ी रीति इहा सॼी आहे सिचुएशन आहे, जोग्राफिकल सिचुएशन। हिन वक़्तु पंजाब जी जेके एस्टिमेट कई थी वञे आबादी, उहा आहे तक़रीबन 9,40,00,000 माण्हुनि ते ॿधल। ऐं जेके असांखे स्टेटिक्स 1998 जी आबादी में मिलिया आहिनि, रेशो मिलियो आहे, त उन वक़्तु सराइकिन जी आबादी पंजाब जी मजमूई आबादी में एथनिक ग्रुप एथनिसिटीअ तौरु 18% सराइकी पंजाब में रहनि पिया, जेका हींअर रफली ॿुधाई वञे 20% आबादी मजमूई तौरु सराइकिन जी आहे। जेकॾहिं असां 20% आबादी पंजाब जी मजमूई आबादी में काउंट कयूं त उन जी तादाद तक़रीबन 1,90,00,000 थिए थो। पर जेके आज़ाद ज़रिया आहिनि, छो त हीअ रियासत जा अंग खरनि आबादी हवाले सां, ऐं रियासत जे हिते वॾी नुक़्ताचीनी बि थी रही आहे आदमशुमारी, ख़ासि तौर ते सिंध में थी, त आदमशुमारी में सिंध खे घटि ॼण आहे या सिंधियुनि खे घटि ॼण आहे, वैसाखा थी करे। अहिड़ी रीति सराइकिन खे तमामु घणा सवाल हुआ उन रियासत जी आदमशुमारी ते। जेके आज़ाद ज़रिया ॿुधाईंदा त सराइकिन जी आबादी तक़रीबन 3.25 करोड़ या 2.5 खां 3.25 करोड़ लॻभॻि आहे। त अॼु असां इहो सम्झंदासीं त काल्ह जेका पंजाब असेंबलीअ में रिथ पेश थी, क़रारदाद पेश थी, उन जा सियासी मक़सद कहिड़ा हुआ, छाकाणि त हिकिड़ो सराइकी सेंटीमेंट आहे जेको तारीख़ी तौरु धार हिकु जुदा एंटिटी रही आहे। उहा पाकिस्तान ठहण खां अॻे बि सराइकी माण्हू ते रहिया, ऐं मुल्तान जी हज़ारे सालनि जी तारीख़ आहे। मुल्तान वॉज़ द कैपिटल ऑफ सिंध ट्वाइस। त उनखां पोइ पाकिस्तान में शामिलु थियण खां पोइ सराइकिन जो सुवालु कीअं उभरियो, ऐं हिन वक़्तु उन तज़ाद खे ख़तमु करण लाइ कहिड़ी सोच आहे। जावेद, बुनियादी सवाल आहिनि। हिकिड़ो त तारीख़ी तज़ाद आहे, तव्हांजे आॾो आहे, तव्हां एराज़ी तव्हांखे तव्हांजे आॾो रखीसीं, आबादी रखीसीं। हिकु टेक्निकली जेका सियासी बुनियादुनि ते विरासत कई पिने बहावलपुर धार ऐं बाक़ी जेको आहे ॾखिण पंजाब धार, ॾखिण पंजाब ऐं बहावलपुर ॻाल्हि त साॻी, उते सराइकी ॻाल्हाईंदड़ आहिनि, जेका बि आबादी आहे सराइकी ॻाल्हाईंदड़नि ते मुश्तमिल आहे। जॾहिं उहे चाहिनि था सराइकी सूबो, त इहा टेक्निकलिटी एतिरो मुंझारो पैदा छो कयो वियो आहे? ॾिसो, जेके क़रारदाद पेश थी आहे, या माना ऑल ऑफ सडन ऐं सरप्राइज़िस इन में इहे आहिनि त नून लीग जेका बुनियादी तौरु मुखालफ़त करे रही हिन सॼे जी सराइकी वसेब में हिकिड़ो जुदा सराइकी सूबो ठाहिण जी, उन्हनि तरफ़ां इहा पेश थी आहे। ऐं उन में जेको आहे बहावलपुर रियासत जी बहाली जो बि ज़िक्र अची वियो आहे, पंजाब खे 3 हिसनि में विरहाइण। हाणे इन में बज़ाहिर हिकिड़ी रेज़ोल्यूशन अची वई आहे, इन जा आइनी पासा छा आहिनि, कीअं थो थी सघे, ऐं इहे डिमार्क कीअं थींदा सूबा, ऐं इन ते रिज़र्वेशन्स बि आहिनि तमामु घणा। बुनियादी 2-3 सुवाल इहे आहिनि त सराइकिन जेका अलॻि सूबे लाइ जेका जुदोजहद पई कई, उहा पंहिंजी जाइ ते हिकिड़ी शनाख़्त वारी जुदोजहद हुई उन्हनि जी। त हू
पाकिस्तान जी फेडरेशन अंदरि हिकिड़ी अलॻि क़ौम वारी हैसियत था रखनि पिया, जिन खे तव्हांखे ख़बर आहे त जेको मज़लूम क़ौमुनि जो इतिहाद ठहियो पूनम, उन में पहिरियों दफ़ो उन्हनि खे रिकग्नाइज़ करे पाकिस्तान में जेके नंढियूं क़ौमूं आहिनि उन में शामिलु कयो वियो ऐं उतां जी लीडरशिप जेका हुई उन पूनम जो इतिहाद जो हिसो हो ऐं पूनम जो जेको चार्टर हो उन बुनियादी तौरु जेको आहे सो उहो चयो वियो हो त पाकिस्तान खे घण क़ौमी रियासत ऐं जंहिंमें सराइकिन खे बि हिकिड़ी क़ौम मञियो वञे। ऐं उनखां पोइ इहा सराइकी मूवमेंट हूअं त तमामु घणी पुराणी आहे, उतां जी जेका इंटेलिजेंसिया आहे, अदीब, दानिशवर या नेशनलिस्ट मुख़्तलिफ़ रुकनि में उनखे खणंदा आया आहिनि, उन्हनि जी महरूमी जी तहरीक आहे। पर पूनम जे उन अलायंस खां पोइ ऐं ताज़ो जॾहिं पीपल्स पार्टी हाणे बाज़ाब्ता तौर ते वज़ीर आज़म गीलानी ऐं उन्हनि खे हिकिड़े स्लोगन तौरु ऐं सदरदारी जे ऐलान कयो त सराइकिन खे जुदा सुञाणप ॾिनी वेंदी। जीअं NWAP तव्हांखे ख़बर आहे त उहो पश्तूननि जो सूबो आहे, उन्हनि जी जेको आहे सो मादर वतन आहे, पर उन्हनि खे नालो जेको अंग्रेज़नि ज़माने जो हिकिड़ो इंतिज़ामी नालो ॾिनल, उन्हनि खे शनाख़्त कोन हुई ऐं उन्हनि खे ख़ैबर पख्तूनख्वा जेको आहे नालो हिन ई हुकूमत में मिलियो ऐं सदरदारी उन्हनि जो ऐलान कयो हो। त अहिड़े नमूने सां सराइकिन खे बि आइडेंटिफिकेशन या शनाख़्त लाइ हिकिड़ो जुदा सूबो, छाकाणि हुननि जी जेका तारीख़ी तौरु पस मंज़र में जेका कावड़ आहे उहा तख़्त लाहौर जेको इस्तारो बणिजी वियो आहे उन्हनि जो, उन्हनि जी जेका तसलुत हो सॼो मुकमल तौर ते इक़्तिदार में, रिसोर्सिस ते ऐं सभिनी वसीलनि जे मथां हुनजी जेका इजारादारी हुई ऐं सियासत मथां जेका हुई उन जे नतीजे में पैदा थियल महरूमी हुई, जंहिंजी सराइकी ॻाल्हि पिया कनि। उनखां पोइ उहे चवनि पिया त खेनि हिकिड़ी सुञाणप बि मिले ऐं पंहिंजो जुदा पिरगुणो मिले ऐं असेंबली मिले जंहिंमें हू मामला मसइला हल कनि। कल्होकी जेका करारदाद पेश थी आहे इन में ॾखण पंजाब नाले हिकिड़ो इज़ाफ़ी तौरु जेको आहे सो यूनिट सूबो ठाहिण जी ॻाल्हि कई वई आहे, जंहिंमें आइडेंटिफिकेशन घटि में घटि सराइकिन खे जेका हू पंहिंजे नाले सां चवनि पिया हिकिड़ी क़ौम वारे सां, जीअं मुख़्तलिफ़ सूबा हींअर पाकिस्तान जी फेडरेशन में आहिनि उहे उन्हनि क़ौमुनि जी शनाख़्त जे हवाले सां आहिनि, त उहा त उन्हनि खे न मिली आहे। ॿियो बहावलपुर जो जेको सुवालु इहो आहे त बहावलपुर माज़ी में बिल्कुलु रियासत रही आहे अंग्रेज़नि जे ज़माने में ऐं 1 यूनिट ताईं हुनजो को वजूद हो, पर बहावलपुर हिस्टोरिकली, कल्चरली, लिंग्विस्टिकली उहा सराइकी इलाइक़े खां कंहिं बि सूरत हाल में ऐं इंतिज़ामी तौरु मुख़्तलिफ़ ऐं जुदा पिरगुणो न आहे। न ई वरी जेको असां जंहिं सराइकी वसे में इलाइक़े जी ॻाल्हि था कयूं, जंहिंजो तव्हां 1,20,000 जी टोटल एराज़ी था ॿुधायो लमसम, उन में बहावलपुर इहो इलाइक़ो बि शामिल आहे। उनजो पाण में को तज़ाद बि असांखे ॾिसण में कोन थो अचे, जो टकराव हुजे इन ॿिले इलाइक़नि जो ऐं इहे हिस्टोरिकली हिक ॿिए जे आम्हूं साम्हूं बीठल हुजनि, जो हाणे इन्हनि खे इंटीग्रेट करे ऐं जेको आहे गॾु नथो रखी सघिजे। ऐं बहावलपुर जेका मूवमेंट हुई उहा तव्हांखे ख़बर आहे त उन में चवनि पिया त हिकिड़ी पॉलिटिकल नवाज़ लीग जी इन करे गेम आहे त उते नवाज़ लीग जी जेका सिंपथी आहे, उते पंजाब जे इलाइक़े में तमामु घणा जेके सेटल माण्हू उते आबाद थियल आहिनि, उहे उतां जे वोट खे ऐं उतां जी डेमोग्राफी खे उते इन्फ्लुएंस था कनि पिया। इन करे जेकॾहिं सराइकिन जे दिलि जे अंदरि उन्हनि खे हिकिड़ो जुदा अहिड़ो इंतिज़ामी पिरगुणो थो मिले जिते हू पंहिंजे असर रसूख़ जेको सियासी उहो बरक़रार रखे था सघनि ऐं उते वेही था सघनि, त उहो सूबो उन्हनि लाइ आइडियल हूंदो। ऐं अहिड़े क़िस्म जेका जुदोजहद जीअं तव्हां पाण ई ॿुधायो त हाणोके दौर में पहिरियों दफ़ो जेको आहे सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी जेको वज़ीर इतलात हो अॻी हुकूमत में, उन ॻाल्हि शुरू कई ऐं उन लाइ एॾी का मास मूवमेंटम जेका आहे असांखे थींदे नज़र न आई आहे, जेका सिराइ मजमूई तौरु जेको आहे सराइकी शनाख़्त लाइ असांखे नज़र आई आहे। त इहो तमामु घणो सरप्राइज़ ऐं उनखां वॾो सरप्राइज़ इहो आहे त असेंबली में सभु पार्टियूं हिन ते मुतफ़िक़ थी वियूं, ॼण हिन जेका पुराणो एग्रीमेंट हुजे हिननि सभिनी मामलनि ते। ऐं PP जेको जीअं एटलीस्ट इहो पियो चयो त हू सराइकिन खे पंहिंजे नाले जी शनाख़्त सां, पंहिंजी क़ौमियत, पंहिंजी आइडेंटिफिकेशन जी शनाख़्त सां हिकिड़ो सूबो ॾींदी, जेको सराइकी प्राविंस हूंदो या वाट एवर जेको नालो हू पाण रखंदा, उहो असांखे बज़ाहिर करारदाद मां नज़र न आहे। ही करारदाद इन जी आइनी हैसियत बाइंडिंग वारी कान्हे का, हिकिड़ी सिंबॉलिक रेज़ोल्यूशन आहे। आइन में जेको तरीक़ेकार आहे उहो तव्हांखे ख़बर आहे, असां अॻिते हली प्रोग्राम जे हिसे में कंहिं आइनी क़ानूनी माहिर सां ज़रूरु हिन ते राय वठंदासीं, ॻाल्हाईंदासीं त आइनी हैसियत हिन जी अञा जेका आहे उहा थियणी आहे। हीअ हिकिड़ी करारदाद आहे जेका सिंबॉलिक आहे ऐं हेॾा हिकिड़ो इशारो वियो आहे त उते हिकिड़ो कंसेंट घटि में घटि इहो पैदा थियो आहे त पंजाब जी इन्हनि जेको आहे सो लाइन्स ते विरासत थींदी। अच्छा, सराइकी क़ौमी मूवमेंट अॻुवाण ऐं काफ़ी मुतारिक अॻुवाण जेके 20-25 सालनि खां वठी सराइकी जे नेशनल काज़ ते हू झड़े रहिया आहिनि, मतिलबु माज़िल ते ताजमहल लांघा, उन्हनि कल्ह कैटेगोरिकल स्टेटमेंट ॾिनी त हीअ असां वॾी साज़िश थी आहे जेका नवाज़ लीग कई आहे, जंहिंजी तव्हां बिल्कुलु वाज़े नमूने चिटो करे असांखे ॿुधायो त उन पंहिंजा पॉकेट्स चाहिनि था, छाकाणि त बहावलपुर डिवीज़न जेका अॻूणी रियासत आहे उते हुनजा काफ़ी पॉकेट्स आहिनि सेटलर्स जा ॿियनि जा, त उते उन्हनि खे सियासी असर पंहिंजो खपे थो। हाणे तव्हां छा था सम्झो जेकॾहिं इहो तज़ाद उभारियो वियो जेको हींअर साम्हूं आयो आहे, पीपुल्स पार्टी घणी तमामु क्लियर आहे त उन्हनि खे सराइकी सूबो ठाहिणो आहे,
ऐं नवाज़ लीग पंहिंजो पॉकेट ॻोल्हे पई। मजमूई तौरु जेको क्लेश थींदो उहो त सराइकियुनि में पाण में थींदो अॻिते हली जेको नज़र अचे थो। तव्हां छा था सम्झो घटि में घटि सराइकी मोमेंटम या सराइकी काज़ खे केतिरो नुक़सानु पियो आहे? ॾिसो, सराइकियुनि मुंहिंजे ख़्याल में बहावलपुर जी सफ़ा आउटराइटली मुखालफ़त न कई आहे। उहो शायदि हुननि जो थी सघे थो हिकिड़ो टैक्टिकल हुजे इहो, छाकाणि साॻियो फिरगुणो आहे उते, हिकु जहिड़ा माण्हू आहिनि, साॻे वसेब जा माण्हू आहिनि, की बहावलपुर जी बज़ाहिर सराइकी इलाइक़े में इहो आयो आहे त नवाज़ लीग जेका आहे उन्हनि जी जेका आहे सा उहा उन्हनि जी विक्ट्री थी आहे हिन मामले में, पर उन्हनि जी मुखालफ़त आउटराइटली नज़र न आई आहे असांखे। जावेद साहब, असां लाइन ते मौजूदु आहिनि अॻूणा इत्तलात वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम दुरानी साहब। वालेकुम अस्सलाम। दुरानी साहब, बहावलपुर सूबा बनने की करारदाद पास हो गई, आपकी क्या राय है? एक तो ताजमुल नागरा साहब का एक स्टैंड आया है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि हमारे खिलाफ एक बड़ी साजिश की गई है क्योंकि ये सारा इलाका सराइकी है और ये एक सराइकी बेल्ट में मबनी सूबा बनना चाहिए था, ये सराइकियों को तोड़ने की साजिश है। आपकी क्या राय है? मैं समझता हूँ कि जी ये उनकी ज़ाती राय हो सकती है, लेकिन बहावलपुर तो सराइकी इलाका भी है, वहाँ पे रियासती बोलने वाले भी लोग रहते हैं, लेकिन बहावलपुर आज से 300 साल से हमेशा जो है वो एक अलहदा खित्ता रहा है, पहले स्टेट की शक्ल में और 1951 के बाद सूबे की शक्ल में। तो बहावलपुर की आवाम जो है वो अपनी पहचान को बहावलपुर की हैसियत से जानना चाहते हैं और इसलिए मुल्तान और डीजी खान के वडेरे जो हैं उनके ताबे होके वो चलना जो है पसंद नहीं करते। इसलिए ये उनका हक है जो उन्होंने लिया है, इसमें कोई साजिश नहीं है। ये एक मजबूरी थी उन लोगों की जो असेंबलियों में बैठे हुए थे, क्योंकि यहाँ के अवाम इससे कम किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने बहावलपुर सूबे की करारदाद और बहाली सूबा बहावलपुर की करारदाद में की। अच्छा दुरानी साहब, एक चीज सामने आ रही है, ये चीज आपने 2009 में उठाई थी, उससे पहले ये चीज सामने नहीं आई थी। 2-3 सालों में ही आपकी यानी जो डिमांड थी वो पूरी कर दी गई, और उससे पहले वो 25-26 सालों से एक तहरीक चल रही है, उनकी वो डिमांड जैसे वो चाहते थे उनकी पूरी नहीं हुई। इससे ये तासुर नहीं मिल रहा कि यानी आप जो है इक़्तिदार आला या इक़्तिदार के असल मालिकों के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए आपकी डिमांड पूरी जल्द हो गई? देखिए जी, जिस तहरीक को मैंने 2009 में उठाया वो तहरीक तो 1970 से चल रही थी, तो सराइकी नाम तो 1975 में आया, 70 में जानें दी गई और लोग शहीद हुए, हजारों लोग जेलों में गए और लोगों ने कुर्बानियां दी, हत्ता के इलेक्शन के अंदर भी उन्होंने वोट भी दिए, लेकिन उनकी जो तहरीक थी उसको लोगों ने बेच दिया। मैंने ये किया है कि 2009 से शुरू की है तहरीक, ना किसी को बेचने दिया है और ना इनके मफादात पे किसी को सौदा करने दिए अपने इलाके के अवाम पे। तो अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है और मैंने सिर्फ अपनी कामयाबी नहीं ली, मैंने लंगा साहब के इलाके के लिए भी कामयाबी ली है। 2009 में मैंने पहली दफा पार्लियामेंट की हिस्ट्री में ये रेजोल्यूशन दिया कि मुल्तान डीजी खान पे मुश्तमिल सराइकी सूबा बनाया जाए। इनकी 25 साल की जो कोशिश थी वो एक तरफ, लेकिन कभी एक दफा पार्लियामेंट में सराइकी सूबे का नाम नहीं आया था। मैं पहला बंदा हूँ जिसने मुल्तान डीजी खान पे मुश्तमिल सराइकी सूबे का डिमांड किया, लेकिन मैं अपने इलाके के अवाम के खिलाफ तो नहीं चल सकता ना। लंगा साहब तो वहां से खड़े होते हैं, उन्हें 360 वोट मिलते हैं, मैं तो वहां के लाखों लोगों को की ख्वाहिशात जो हैं मैं उसके ऊपर चलने पर मजबूर हूँ। तो मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक कमरे में 15 दिन में रह के, लंगा साहब ने क्या किया, 15 दिन प्राइम मिनिस्टर ने अपने पास रखा और इन्होंने सराइकी सूबे की जगह जनूबी पंजाब ले लिया। और जब कौमी असम्बली में करारदाद पास करवाई थी लंगा साहब ने, वो जनूबी पंजाब की थी। सराइकी सूबे को 15 दिन के वजीर आजम हाउस के क़याम के नतीजे में बेच दिया। तो मैंने ना बहावलपुर को बेचा, ना मुल्तान डीजी खान पे मुश्तमिल सराइकी सूबे को बेचा। इंशाअल्लाह बहावलपुर सूबा भी लूंगा और मुल्तान डीजी खान पे मुश्तमिल सराइकी सूबा भी लूंगा
اور کسی کی سازش کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا درانی صاحب، آپ نے کہا کہ سرائے جنوبی پنجاب جو ہے وہ ملتان کے وڈیروں کے لیے بن رہا ہے، تو دکھائی تو بظاہر ایسے دیتا ہے کہ بہاولپور کے وڈیروں کے لیے بن رہا ہے، لیکن اس میں آئینی جو طریقہ کار ہے وہ تو ابھی تک رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک ریزولوشن ہے 239 جو سب آرٹیکل 4 ہے، اس کے تحت کچھ لٹیگیشن بھی، کچھ ایسے کیسز بھی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں جو نئے پرانسز کے اگینسٹ وہاں پٹیشنز چل رہی ہیں، تو آئینی طریقہ کار میں یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ تو ریزولوشن ہے فی الوقت تک۔ دیکھیں، یہ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہاولپور میں کوئی وڈیرا نہیں ہے۔ اس کی وجہ بھی سن لیں کہ بہاولپور میں نہ کبھی انگریز رہا اور نہ کبھی سکھ رہے۔ یہ جتنے وڈیرے اوپر بنے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے سکھوں اور انگریزوں نے بنائے ہیں، اور یہ ان کے گھوڑے صاف کیا کرتے تھے، اور آج ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بارے میں تو آپ کو کلیئر ہے، بہاولپور میں کوئی وڈیرا نہیں ہے، اور اسی لیے جب 1970 میں پاکستان کو تقسیم کیا گیا تھا تو مشرقی پاکستان کو علیحدہ کر دیا گیا، وہاں بھی وڈیرے نہیں تھے، اور بہاولپور میں چونکہ وڈیرے نہیں تھے اس لیے یحییٰ خان نے اس کو پنجاب کے ساتھ شامل کر دیا۔ تو یہ تو میں تاریخ کی درستگی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ باقی جہاں تک آئین کا تعلق ہے، آئین کی جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد کوئی جو مرکز نے جو قرارداد پاس کی تھی وہ آئین کی خلاف ورزی تھی، کیونکہ صوبائی امور میں مرکز مداخلت نہیں کر سکتا۔ مرکز یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی سندھ میں جی آپ کراچی صوبہ بنا دیں، مرکز یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی سندھ میں آپ سکر صوبہ بنا دیں، یہ مرکز کا کام نہیں۔ بین ہی پنجاب کے اندر کون سا صوبہ بننا ہے اور کس طرح بننا ہے، 18ویں ترمیم کی روح سے اس کا اختیار صرف اور صرف پنجاب اسمبلی کو ہے۔ ہم نے پنجاب اسمبلی سے یونینیمس قرارداد کروائی ہے، متفقہ قرارداد، جس کے تحت انہوں نے بہاولپور صوبے کی بحالی اور ملتان ڈی جی خان کے مشتمل نئے صوبے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس مطالبے کے آنے کے بعد اب جو پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی اور سینٹ، ان پہ قانونی بائنڈنگ ہے کہ وہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں، اور اگر وہ یہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آئین کی روح سے انحراف کر رہے ہو، اور آئین کے خلاف کوئی مقدمہ ہو یا کوئی چیز بھی ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ آئین پاکستان یہی کہتا ہے کہ یہ اختیار صوبے کے پاس ہے کہ صوبہ اپنی حدود میں کسی تبدیلی کو ریکمینڈ کر سکتا ہے، یا صوبے کی اجازت کے بغیر آپ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اچھا دورانی صاحب، ریسورس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے آپ کے علاقے میں، کیونکہ آپ بھی جو سرائکی وسیع فارمرلی جو کہتے ہیں اس کے ہارٹ میں ہیں، تو یہ ریسورسز کس طرح ڈسٹریبیوٹ ہوں گے اور کس طرح ڈیمارکیشن؟ یہ بہت سارے پیچیدہ ایشو ہوتے ہیں نئے صوبوں کے لیے، اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے بہاولپور صوبے کا، اس کی حدود کی ڈیمارکیشن ہوئی بھی ہے، کیونکہ یہ پہلے صوبہ تھا، اور اس ڈیمارکیشن کے اوپر ہی جو ہے بہاولپور صوبے نے بحال ہونا ہے، اور وہ تمام نقشے، ہر چیز، حتیٰ کہ صوبائی اسمبلی کی کاروائیاں، تمام دفاتر، تمام فیسلٹیز بہاولپور میں پہلے سے موجود ہیں۔ البتہ جو جنوبی پنجاب یا سرائکی صوبہ جو بننا ہے اس کی حدود کا ابھی تعین ہونا ہے، اور اس کے تعین کے لیے جو ہے ڈیفینیٹلی کوئی کمیشن وغیرہ بنانا پڑے گا، جو کمیشن جو ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرے اور ان کو جو ہے ان کو طے کرے۔ باقی جہاں تک وسائل کی تقسیم کا تعلق ہے، وسائل کی تقسیم کے فارمولے جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا حق اس سال 75 ارب روپے ہماری وجہ سے ملے پنجاب کو، اور ہمیں کتنے ملے؟ ہمیں 15 ارب روپے ملے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی ملا کے۔ تو اس لحاظ سے جو بھی مالی اس وقت ناانصافی ہو رہی ہے بہاولپور کے خطے کے ساتھ، وہ جو ہی اس وقت ہمارا بجٹ اگر 15 ارب ہے تو جب بہاولپور صوبہ بحال ہو جائے گا تو 110 ارب ہوگا، اور یہ کوئی چھوٹا علاقہ نہیں ہے، یہ پنجاب کا 1/4 ہے، اور اس کی آبادی جو ہے وہ بلوچستان سے دگنی ہے۔ تو اس لیے مطلب بہاولپور کو نہ ریسورسز کی کمی ہے اور نہ ہی کسی قسم کے علاقے کی کمی ہے۔ ہاں، بس ایک کمی ہے بہاولپور میں کہ یہاں وڈیرے نہیں ہیں۔ بڑی مہربانی محمد علی درانی صاحب،
آپ نے کو موقف سے ہمیں آگاہ ناظرین سے بڑھو نانڈو بریک آپ بیر حاضر تھا جاوید صاحب بابت گلائیں دونوں صاحب بہاولپور میں کے بڑھو نانڈو بریک